हेलो डियर स्टूडेंट। मैं हूँ हिमांशु माला। चलिए स्टार्ट करते हैं एफ का रिवीजन का पूरा वेब दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग एक्चुअली एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस द मैन आस्क एक्चुअली frequent here discussed in this lecture. Let's start. Let's start the discussion with the lanthanoids and as we know that there are 14 elements in the lanthanoid series and the first one is the cerium and the last one is the lutetium and let's start PYQs actually first. For start the PYQ, let's discuss some basic things. Here they are the lanthanoids and here they are always hard and that atomic number as the atomic number increases, uh, the melting point increases actually from here to here. Okay. जैसे atomic number increase होता है इसका melting point भी increase होता है and that melting point lie between the 1000 Kelvin to 1200 Kelvin except जो समरपियम होता है का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1630 होता है दैट इज एक्सेप्शनली हाई एंड they all have the typical metal structure. It means that they does not have the exact structure. If we see there is some sort of metals, they have the fixed lattice structure. If someone exists in the BCC, FCC, but that are the typical. It means that they have that they does not have the actual matlab that does not have the exact structure that can maybe exist in any form. Okay, and due to which there are more number of electrons, so they are the good conductor. Okay, of electricity, not heat, and the density varying very smoothly, and from the europium to ytterbium, and occasionally for the samarium and the terbium. That is not much important. And there is a diamagnetic nature of the three elements in the oxidation state plus 4, the cerium plus 4, ytterbium plus 2, and the terbium plus 2. And the all others are the paramagnetic. एंड D0 एंड D14 सिस्टम में ये क्या होता है डायमैग्नेटिक होते हैं जो सीरियम होता है वो D0 सिस्टम में डायमैग्नेटिक होगा और यूट्रोपियम में जो टर्बियम होता है वो F14 सिस्टम में डायमैग्नेटिक होता है एंड we know that most of the paramagnetic are the colored, but some are not colored actually. That is not the based on the theory actually. There are the charge spectrum theorem and theory actually, not theorem, and many sort of things, MMCT and MMTC. ठीक है बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि कलर को डिसाइड करती है. Here we discuss same thing actually for the gadolinium. Let's जो gadolinium होता है वो F7 सिस्टम में होता है एक्चुअली gadolinium plus 3 and it is actually colorless and it is paramagnetic actually. ठीक है ये काफ़ी अच्छा फैक्ट है ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है एंड as we know that from lanthanum to lutetium from the graph we see that lanthanum to lutetium जनरली क्या होता है एटॉमिक रेडियस होता है वो डिक्रीज करता है ठीक है दे ऑल आर इन द प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए है ठीक है बट एक्सेप्शनली हाई जो होता है एटॉमिक रेडियस वो यूरोपियम का होता है दैट इज एट द टॉप एक्चुअली एंड जो मिनिमम होता है वो लुटेनियम का होता है एंड दैट एक्चुअली आस्क इन द जेई मेन सेक्शन एंड देयर इज सम मिस्टेक हियर एंड द स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो यूरोपियम प्लस थ्री का तो प्लस टू में से प्लस टू ज़्यादा होता है एंड जो गैडोलिनियम होता है वो ज़ीरो पे नहीं रह के प्लस थ्री में ज़्यादा होता है बिकॉज देर इज़ अ D7 सिस्टम ठीक है एंड जो टर्बियम होता है
वो टर्बियम +4 का ज़्यादा होता है, बिकॉज द ऑल ऑफ द हैव सेम रीज़न, बिकॉज एसओपी जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है इधर से उधर जाने। तो लेट द मोर पॉइंट। जो हमारे यूरोपियम होता है और जो यूट्रोपियम होता है, वो हाई कंसंट्रेशन ऑफ द अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। हाई कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया में सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट question that is very interesting actually. We discussed that there cerium plus 4 and terbium and lutetium, some sort of only three elements have the diamagnetic nature in the respective cation. But about the paramagnetic nature, we can't discuss. Let's see which one has the maximum paramagnetic nature. That is the neodymium. That asked many times, and the neodymium has the maximum paramagnetic. That is very interesting. Element is the lanthanide series, obviously lanthanide series का जो कि only man-made. It means that the only man-made is synthetic element. That will be uh, certain reasons behind it actually why it is man-made, because most of the element are non-radioactive here, but some sort of things make radioactive lanthanide series actually. So they can be formed in some sort of thing during that radioactive reaction. So they if there is a something that called as synthetic element. So which one is the synthetic element here? That is only synthetic element in the lanthanide series. That one is the promise. So the answer is pro. कुछ पॉइंट हम एनसीईआरटी से भी डिस्कस करने वाले हैं, चलिए शुरू करते हैं। बिकॉज जो केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है वो यहाँ ड्रॉ नहीं कर सकता मैं। जो केमिकल रिएक्शन वाला पार्ट है बेसिकली जो लैंथेनाइड्स होते हैं वो एक्ट करते हैं एज अ एल्यूमिनियम। ठीक है, तो उसकी जो रिएक्शन होती है वो आप एल्यूमिनियम समझ के भी करवा सकते हैं। एंड जो लैंथेनाइड होता है उसको एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये लोग, जो भी एलिमेंट होता है जनरली। एंड देर इज अ बेसिक ऑक्साइड दे फॉर्म एक्चुअली बिकॉज दे आर द मेटल ऑक्साइड। तो डिस्कस द एनसीईआरटी हियर। तो एज वी नो दैट द लैंथेनम की जो रिएक्शन होती है वो किसकी तरह होती है? एल्यूमिनियम की तरह होती है। इट इज एनालोगस टू द एनालॉगस होता है ये किसकी तरह? एल्यूमिनियम की तरह। ओके, so we take the aluminum here, and as we know that it is a metal, so it will form a hydrogen gas here. Okay, that is very easy. And with the halogen there is a lanthanum plus 3. Most common oxidation state is the lanthanum series is the plus 3. So it will react with the halogen, so it will form the lanthanum X3 element. So similarly for the OH, it will form the lanthanum plus 3, then it is OH minus, and that will form the Ln OH whole 5, and that will form the hydrogen gas also. Similarly, there is a carbide, so Ln plus 3. Here there is C2, and there is lot of things we discuss in the carbide basically formation. So we can't discuss here actually. There's too many factors that depend on the carbide formation. So we that we learn actually. That is very important question. So C2 4 minus here actually, and it will form the LnC2.